हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? तो मैं आज बात करूँगा टॉटनहम हॉटस्पर्स की। एंड जैसे कि आप सबको पता है कि ये एक ऐसा क्लब है कि अब इसकी क्या हालत चल रही है एंड हाउ दिस हैज़ हैपेंड। कैसे हम लोग यूरोपा कप के विक्ट्री के बाद we all thought, okay, now this is a new Spurs. We could see Spurs 2.0. There was a very high morale in the club, the fans, and कैसे ये आगे जाके how disastrous the season has been. The season has not yet ended. There are 9 games left, but right now the situation is quite dire, desperate. The management is desperate. The fans are unhappy, and it is a quite common belief between the fans and the management कि भाई championship is actually a real thing now for Spurs and the downfall is quite real. ठीक है. So let's first talk about कि how Tottenham Hotspurs were at a time, and we will come to this point कि क्या हुआ है. So let's talk about the era pre winning the Europa Championship, Europa League, and what has like happened. Let's see. See, जब मैं टॉटनहम हॉटस्पर्स की बात करता हूँ ना, ठीक है गाइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट कम्स टू माय माइंड यार, टॉटनहम हॉटस्पर एक नॉर्थ लंदन क्लब है, ठीक है. And this club, they used to win things in the earlier time and इनकी एक legacy है. But let's come to the recent years, right? एक time पे in 2016 and all, ये team was quite good. We had players like Harry Kane, Heung-min Son, Luka Modric, Gareth Bale. ये सब players हुआ करते थे उस time पे. And what used to happen is we were in the title race competitions यार, ठीक है. एंड प्रीमियर लीग के टाइटल रेस के लिए कम्पीट किया करती थी ये टीम एक टाइम पे. ओवर द ईयर्स लेट्स गो टू 2019. 2019 में ये टीम यार चैम्पियंस लीग का रनर अप रह चुकी है. दे लॉस्ट टू लिवरपूल. मॉरिशो पोचेटिनो के अंदर दे खेली थी एंड दे लॉस्ट टू दिस. एंड उसके बाद एवर सिंस मॉरिशो पोचेटिनो हैज लेफ्ट टॉटनहम हॉटस्पर्स, दिस टीम हैज बीन इन शैटर्स यार. There were different managers. Jose Mourinho came, Antonio came. ठीक है. आप उसके बाद एंज पोस्टेकोग्लू को लेके आते हो. बीच में आके एक आधा इंटरिम मैनेजर आपने रायन मेसन को रखा था कुछ टाइम के लिए एज इंटरिम मैनेजर. एंड फिर आप एंज को लेके आते हो, राइट. एंड नाउ लेट्स कम टू दैट पार्ट. भाई एंज पोस्टेकोग्लू इज वन ऑफ द मैनेजर्स यार जिसके अंडर वी हैव वन अ सिल्वरवेयर. दिस क्लब वाज क्वाइट डेस्परेट एंड वी वन अ यूरोपा लीग, right? So what happens next? That season when we won the Europa League, Spurs were struggling in the Premier League and they ended 17th, right? They were somehow saved from being relegated, whatever happened. And then what management does is, and you have won a cup for us, but this does not justify the performance in the Premier League, and this was questionable by the management. The fans were not expecting this because there was, let's say, the fans were crazy at Postecoglou. But even then, when he delivered, the fans were happy. They were like, okay, let's give him a chance. But the management was like, they know this is the time we draw a line. We're going to do something different. We're going to remove him. Okay, fine. What do? On June 8, 2025, you appoint Thomas Frank. नाउ थॉमस फ्रैंक एक अपकमिंग मैनेजर की तरह आप कह लो. ब्रेंटफोर्ड के अंदर उसने क्या किया था कि वो प्लेयर्स को कन्वर्ट करता था. बिकॉज व्हाट द क्लब एंड व्हाट द मैनेजमेंट वांटेड वाज कि वी डोंट वांट टू स्पेंड मनी, which is actually a problem, quite a problem, because when you say Tottenham Hotspurs is a big six club, right? You should have, what is the reason you say so? Because of the finances. But when you come on spending the finances on your wages, you don't step up in the same line, right? सो दिस इज व्हाट हैपेंस. इसलिए आप चलो आप थॉमस फ्रैंक को लेकर आए, आप ये चाहता. बट व्हाट हैपेंड यार, थॉमस फ्रैंक when he came, he wanted to focus on improving the defense of this team. He was quite a pragmatic manager, ठीक है. And his type of plays, what he wanted was यार उसको ट्रांसफर विंडो भी ढंग से मिली नहीं. He had a tenure of 8 months under this club. Usually this club, after each 2 years, there's a sacking done. ठीक है. The management changes the manager and there's no stability. But now
थॉमस फ्रैंक कम्स इन एंड वी ऑल नो कि कैसे मॉर्गन गिब्स फाइट को लेके आने वाले थे. एवरीथिंग वाज कंफर्म्ड एंड हाउ नॉटिंघम फॉरेस्ट fought back and stopped Gibbs White to go from us. Everything was perfect for Crazy Hezzy. We had that deal. How Arsenal came and hijacked. So this is how the season started. What did we do out of desperation? We overspent on Xavi Simons. एंड इट इज़ नॉट ईज़ी कि ला लीगा का एक प्लेयर है आपके पास इधर आ जाएगा एकदम से चलने लग जाएगा, राइट? सो ही टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू कोप इन एंड इवन नाउ इसकी परफॉर्मेंसेस ऐसी नहीं होती, बट स्टिल वी आर ओके विद हिम. At least we know he scores and he shows some intensity in the game and we're like fine. But coming back, what happened when Thomas Frank came in, guys? We had a chance to play the UEFA Super Cup. Now, what is the UEFA Super Cup? This is where the Europa League winner and the UCL winner plays together. And you know that match, because maybe it was a manager bounce, let's say, or whatever. We were quite phenomenal for the first 80 minutes. We were dominating Paris Saint-Germain, and what happens? Paris Saint-Germain bounces back in the last 10 minutes and they score two goals. And that is the beauty of football. We lost to Paris Saint-Germain in the penalty kick-out, but he still missed the kick. And that was the time, first thing he lost. Now I'll share you my screen and हम लोग फिर बात करते हैं कि what happens next, right? So, let's see. Ab, I want you to focus on this, right? So, when you look over here, like this is the match which I want to talk. This is the Super Cup match which I talked about. So now the Frank is in, and we are quite happy with how it is going so far. Then we play Burnley, right? While we do so, um, okay. So now let's talk about Burnley, shall we? तो अब जब मैं बर्नली के साथ बात करता हूँ ना, तो व्हाट हैपेंस इज कि आई सी बिकॉज वी वर ऑन अ हाई नोट ओवर है कि हम कैसे वी परफॉर्म दिस मैच इन सुपर कप. So we win under Burnley. It was a phenomenal match. We win in Etihad with Manchester City. We were happy. Now this is where we get the first blow यार. हमको पहला झटका लगता है, हम अपने घर पे बॉर्नमथ से हार जाते हैं एंड इवालिसन यहाँ पे स्कोर करता है हमारे अगेंस्ट एंड दिस वाज क्वाइट डिसअपॉइंटिंग. बट ठीक है, चलो, वी विन फ्रॉम वेस्ट हैम. दिस इज़ अवर फर्स्ट यूसीएल का गेम. वी विन फ्रॉम विलारियल. ठीक है. सो व्हाट डू यू सी, एक्सेप्ट वन डिफीट फ्रॉम बॉर्नमथ, रेस्ट सब गेम्स में आप देखोगे ना, जो पहले के 1, 2, 3, 4, 5, तो इन पहले 5 गेम्स में आप देखोगे ना, चलो, लॉस फ्रॉम सुपर कप, ओके, बट पॉजिटिव, राइट? देन कम्स PL मैचेस, द फर्स्ट मैच, द सेकेंड, तीसरा हार के, चलो चौथा. तो इन 4 PL गेम्स में अगर आप देखोगे तो 3 विक्टरीज, 1 डिफीट. It is a positive. The fans are happy. Yeah, yeah. Chalo, we lost to Bournemouth. Let's leave that. We lost in home. Fans were disappointed, but yeah, we are winning. We play the first UCL match. We win over there. Then we play with Brighton, and defeating Brighton in the home is not that easy. But yep, we did a draw. So things were questionable, but we were like still okay. We play our first game of the EFL. We play with Doncaster and we win that. फिर हम लोग वुल्स से खेलते हैं, यहाँ पर ना सब चाहते थे, द फैन बेस वाज थिंकिंग कि यार दिस इज़ वेयर वी हैव टू विन, बट वी ड्रॉट. सो दिस इज अगेन, दिस इज द टाइम वेयर वी वर डिसअपॉइंटेड. ठीक है. We play with Bodo Glimt in the UCL and we draw. At that time, we were a bit disappointed because Bodo Glimt, at that time we were like, how could we draw this? This should have been a victory. So these 2 games आप देखोगे फिर से, then again people were like यार क्यों, why did we draw this? These are the games we had to win. Then we play Leeds United. This is before the international break, and we won that match. This match was conducted in Leeds' home ground, and we won over there. And this was a positive thing. Chalo, now the international breaks gets over, and we play with Villa, and हम यहाँ पे we lose to Villa. So people were quite frustrated. And अब ना चलो. So after all this, now what happens is, now when we go to Monaco, right? This is a UCL game.
It was an utter disastrous game. 23 shots were attempted against Tottenham Hotspurs. Monaco sadly couldn't convert it. ठीक है, वरना मोनाको यहाँ पे जीत जाती. और we were very poor, even though the score line doesn't speak for what you see. But yep, we played in under Monaco in the home ground, and we were playing haram ball, proper haram ball, and fans were quite disappointed. And we were lucky we escaped this. फिर हम प्रीमियर लीग के गेम पे आते हैं. We defeated 3-0 Everton, and we were happy. ठीक है. Now comes the fourth round of EFL Cup, the second round which we played. We were defeated by Newcastle. Now we play with Chelsea, right? ये एक मैच है जहाँ पे you start to get understanding की how things and how the downfall of this club started, because you know when next matches were happening, fans were like, man, we want to be supposed to make some games. Yes, चेल्सी ने हमको खोल के रख दिया था with their press, and we had no answer to this. They came prepared for us. Even though Chelsea, they defeat us in all the times. They were prepared for us, and कैसे उन्होंने खेला. So you would see this, and the Chelsea's game, even the score line is 1-0, but it was a disastrous game, bro. We were out. We were outdone. Then we played with Copenhagen in the UCL, and we won a 4-0. And this is where, Van de Ven का एक प्यारा गोल आया था. What a run that was. And कैसे उसने वो जीती थी. So this is something you have to look upon. This match was quite happy for us, and we didn't expect this. Then we play Manchester United, bro. And Manchester United, was quite struggling in that phase. Everybody was talking about Manchester United, this, that. They lost to Grimsby Town also during that time. So when we played United, we were nowhere in the match, and then Richarlison comes in and scores for us. Even though he does that, removes his shirt, and then again there's a third, like another goal by United, and they were able to draw with us, or else this game was ours. So then comes the North London Derby, and this is where the fan base starts getting pissed as for hell, because what Thomas Frank is, he's a pragmatic player. His approaches are different. उस बंदे ने यहाँ पे बैक फाइट खिलाई थी ये सोच के कि हम सेकेंड हाफ में अटैक करेंगे, पहले हाफ में वी विल होल्ड बैक, सर्वाइव, एंड देन विल गो फॉर द काउंटर. बट यू नो वट, आर्सेनल ने खोल के रख दिया था स्पर्स को. इवन आफ्टर प्लेइंग अ बैक फाइव, दिस प्लेयर्स वर नॉट रेडी फॉर दैट. एंड यू नो वट, फ्रैंक यूज्ड टू कीप ऑन चेंजिंग टैक्टिक्स, एंड जहाँ पे हम जीत भी रहे होते थे ना, इवन डिस्पाइट दैट, फ्रैंक अपनी टैक्टिक्स बार बार चेंज करता था. तो उस चक्कर में फैंस वर क्वाइट डिसअपॉइंटेड, एंड यू वर लाइक कि यार आपने बैक फाइव खिलाई क्या सोच के, एंड यू वर टैक्टिकली आउट क्लास. एज ए स्कोर्ड अ हैट्रिक अगेंस्ट अस, एंड आई थिंक Ota, not naming the player correctly, I'm sorry, I'll check upon that. But इनका एक और player है जो always scores against us at that moment. So this was utter disaster. We lost 4-1. Then comes the UCL match, and this was the only UCL match which we lost so far. बाकी जितने matches हुए हैं, we either won it or we drawn it. So we had, given a quite good match, but due to silly mistakes of Romero, we lost this match. And yep, फिर आप देखो हम फलहम के साथ खेलते हैं. This was another horrific match यार. We conceded 2 goals in the first 8 minutes. Then we play to Newcastle and in St James Park, and we were able to take a draw. So that, then again this match made refereeing decisions कुछ poor थे, and it was questionable. But we were able to draw it, and this is where we started to, let's say, gain some confidence, because we didn't expect that. We won with Brentford the next game. Now coming to the UCL game of Salvia Praha, what was important for us? Heung-min Son attended this game, and we gave Heung-min Son the proper farewell which we wanted to give, because what happened with Spurs is, since the Europa League got over, Heung-min Son decided that it's time he will leave Tottenham Hotspur, and he went to play MLS, and he's playing for the LAFC over there, Los Angeles FC. So हमारे लिए एक वो फैन बेस के कनेक्शन है ह्यूमिंग सॉन से, हमारे एक लेजेंडरी प्लेयर है. सो वी गेव हिम अ प्रॉपर गुड बाय, एंड आई एम हैप्पी कि वी वन दिस मैच कंफर्टेबली, एंड इट वाज अ गुड प्रॉपर सेंडिंग. Then we have started to develop a trust now कि चलो things are going on a right track, we are on a track to come back. But it doesn't work that way. We play Nottingham Forest.
आप नॉटिंघम फॉरेस्ट के साथ खेलते हो, नो विन इन द गेम, दे डिस्ट्रॉयड यू, they utterly destroyed you. Then you play with Liverpool. Now this is a big match for us, right? When we played with Liverpool, what happened is, by we were given two red cards. How this started, वो जावी सिमंस का पहला रेड कार्ड आया. What happened because of that, we were forced to play in 10 man Spurs, and 10 man Spurs भाई पीछे बैठ की couldn't do the attacking, couldn't play with their way. And even though when it started, they started to come back. They brought Richarlison as a sub later, and he scores. जब एक बार स्पर्स ने वो किया, they started to give a fight. But then even then, Romero does stupid things, and वो खुद रेड कार्ड ले लेता है. And the South American players, they're quite इनकी इंटेंसिटी ऐसी होती है गेम की वजह से, and they do these things. तो then due to this, इस गेम में, people were like that 9 months Spurs were more possessive than the entire Liverpool team, and क्या possession रख पा रही थी. तो people talked about this game, even though at the end we lost it. But yeah, देन वी प्ले क्रिस्टल पैलेस थैंक्स टू आर्ची ग्रे. उसका एक हेडर आता है, एंड ये बहुत ही बोरिंग गेम थी यार, क्वाइट ही डेड मैच था. बट ड्यू टू आर्ची ग्रेस हेडर वी वर एबल टू विन इट. दिस गेम इन द 60th मिनट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एज फार एज आई रिकलेक्ट. फिर आप ब्रेंटफोर्ड के साथ खेलते हो. नाउ आप देखो, ये 2025 का सीज़न ख़त्म होता है, मतलब ये ख़त्म होता है, जनवरी शुरू हो जाती है. ब्रेंटफोर्ड के साथ हमारा पहला मैच होता है, लाइक वी 1-2-0 लिटरली सम टाइम बैक, एंड फिर आप ब्रेंटफोर्ड के साथ खेल रहे हो, आप turns into a draw. And I understand Brentford improved their performance, and defeating Brentford that time wasn't that easy, but you should have done it. आप नहीं कर पाते. Then you draw with Sunderland, and उसके बाद this is the game, which by this time people were totally messed up with Frank, and they were disappointed to hell. They were protest in the club कि आप Frank को निकालो. But I personally started going against Frank after this match, because what happens is that Semenyo was playing his last game, and now उस बंदे का एक वो हो गया कि चलो he has to go, and whatever he scores that third goal, bro, and you should have looked Frank's face at that time, and he looked clueless. And like, you're a manager, there's a game going on, okay, you have considered, now come up with something, there's a plan B, do something. You were clueless, you just gave up at that time, and I was pissed कि manager ऐसा कैसे कर सकता है. Then you come to the FA Cup. For Spurs, FA Cup means something, but no, Villa was in quite good form. They won 11 matches in a row. They were in a good form, and we knew that we wouldn't put a match up, and that happened. फिर आप वेस्ट हैम के साथ खेलते हो, एंड आप वेस्ट हैम से आ जाते हो. इट वॉज क्वाइट क्वेश्चनेबल, एंड थॉमस फ्रैंक, द मैनेजमेंट did a mistake. If they wanted to really sack Frank, which they did in February, by 14th of Feb, so they should have done this already at this time in January of 17, because winter window में उसको चांस मिल जाता किसी आप मैनेजर को लेके आए हो. But you didn't do it. I don't support sacking managers, because this club doesn't have any stability. Keep on sacking managers again and again, it doesn't work that way. But it became a need of an hour, and it was quite late. That is what I'll say. Then you play Dortmund. Nobody was expecting you to win, because by now everybody is like, okay, this club is not that good. But you surprise us. You win against Dortmund. फिर आप बर्नली के साथ खेलते हो, एंड मार्टिन डुब्रावका, माय गॉड, व्हाट अ गोलकीपर दे हैड. अब सम पीपल विल से कि यार ये छोटी टीम्स के गोलकीपर इतने सेव्स कर लेते हैं, बट आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड, ब्रो, द वे ही स्टॉप्ड आवर गोल्स. एंड इवन दो वी वर ट्राइंग, हम लोग नहीं कंसीड कर पाए, एंड देयर इज अ बिग रोल ऑफ मार्टिन डुब्रावका फॉर बर्नली टू ड्रॉ दिस गेम. देन यू प्ले फ्रैंकफर्ट. By this time, I haven't even not spoken about the injuries so far. Yeah, injuries became so bad by this time when we played, right? We didn't have any squad left to play. Bayfield played in this match. Uh, डेन स्कारलेट प्लेड. हम जितने भी चाहे अपने हमारी बेंच पता क्या थी, हमारे अकेडमी प्लेयर से भरी हुई थी. वी डेंट हैव एनी प्लेयर्स लेफ्ट. एंड टॉकिंग अबाउट UCL, राइट, व्हाट हैपेंड इज वी डिडंट इंक्लूड मटीस्टर इन द चैंपियंस लीग स्क्वाड. बट व्हेन वी डिडंट हैव वी हैड इंजरीज, वी ब्रॉट इन टेल, एंड देन व्हेन डोमिनिक सोलंकी बिकेम अवेलेबल, राइट, वी रिमूव टेल. नाउ कमिंग बैक टू दिस, खेलते हो सिटी के साथ, जब आप खेल रहे हो यहाँ पे, राइट, तो यू वर नोवेयर इन द फर्स्ट हाफ, एंड देन यू कम बैक. वो जो आपके दो गोल्स थे यार, डोमिनिक सोलंकी, व्हाट अ पास, एंड यू गेट कॉर्नर गैलर. उसका पहला मैच है यहाँ पे, पहला और दूसरा मैच है, एंड कॉर्नर गैलर का क्या असिस्ट था, एंड डोमिनिक सोलंकी का गोल, वो व्हाट अ गोल दैट सेकंड गोल वाज.
एंड उससे पहले भी एक गोल हमने किया था, तो द टू गोल्स वर क्वाइट फिनोमिनल है, डोमिनिक सोलंकी ने ही मारे इस दोनों। एंड दिस वाज द रिटर्निंग मैच ऑफ डोमिनिक सोलंकी एंड ही परफॉर्med। यू प्ले अगेंस्ट यूनाइटेड सेम और मोनाको वाज रिपीटेड, ओनली थिंग डिफरेंट ओवर हेयर इसकी मोनाको के केस में ना आप बच गए थे, बट व्हेन इट केम टू यूनाइटेड देन अगेन यहाँ पे पता क्या हुआ, इन द फर्स्ट 25 मिनट्स वी वर वी वर लुकिंग गुड, हम लोग compete कर पा रहे थे, इवन दो वी couldn't attempt much, बट एक चांस बन रहा था, हमारी बॉल थी, बट व्हेन रोमेरो टुक दैट फूलिश थिंग, ही डिड मिस्टेक, रेड कार्ड मिला, वी वर 10 men डाउन एंड वी वर क्रिपल्ड यार, वी हैड टू रिमूव विल्सन ओडो, बट बाय दिस टाइम वी डिडंट हैव मच बैक्स लेफ्ट ऑल्सो, ऐसा कोई प्लेयर बचे भी नहीं थे हमारे पास फाइट करने के लिए, तो we were more dependent on the counters, and then we all know how we lost this game. Then comes the Newcastle game. अब आप इस मैच को देखोगे ना, what happens is कि भाई जब आप इस गेम में होगे, न्यूकासल गेम में यार, यू कुड सी हाउ द पोजेशन वाज विद न्यूकासल, एंड वो कैसे कॉर्नर से अटैक कर रहे थे, 21 कॉर्नर्स अटैम्प्ट किए गए हमारे अगेंस्ट, सो इट स्पीक्स ऑल ब्रो, एंड you were able to somehow in the second half you were able to score one goal. The game was drawn by 1-1 and it was hardly 4 minutes भाई, उसके बाद आपने फिर कंसीड कर दिया. Now after this match is when Thomas Frank gets sacked, ठीक है, February of 10th. uh, Now 12 days later there's a match against Arsenal, the North London Derby, and Igor Tudor comes. What happens then? जब Tudor को हम लेकर आते हैं ना, तो this is where yep, this is where now we see वो बैक थ्री खिलाना चाहता है and all, but this is where we started to look, okay, this is the first time Spurs are putting up a fight, until that time it was 1-1 and 2-2, because in 32nd minute आप पहला स्कोर कंसीड करते हो, फिर आप 34th मिनट पे कोलो स्कोर्स, एंड सेकंड गोल भी जब आता है ना, द वे गेब्रियल एंड द रेफरिंग वाज डन, वी लूज द इंटेंसिटी कमिंग टू द सेकेंड हाफ यार. उससे पहले ऐसे ही एक गोल मार चुका होता है. By the second half, you were nowhere. In the first half, I can still say that you were in the match and you were trying to compete. In the second half, you were dead, यार. Arsenal was all over you because उनकी quality of players भी better थी, and whatever the reasons we were in. Then comes the match against Fulham. यार, you couldn't do basic defending over here. यार. Basic mistakes आपकी नहीं हो पाई. Even in this match, आप देखोगे ना, the way Gyökeres scores और Ezzy scores in some of the things, यार, आप basic नहीं कर पा रहे थे. जेड स्पेंस वॉज लूजिंग द बॉल, आप मैन टू मैन मार्किंग प्रॉपर नहीं कर रहे थे. सेम थिंग यहाँ फलम के मैच में भी हुई, आपकी प्रॉपर डिफेंडिंग ही अच्छी नहीं हो रही, आप बेसिक ही नहीं कर पा रहे हो, लेट्स नॉट इवन आस एनीथिंग. तो आप, दिस इज डिसअपॉइंटिंग. एंड जो पिछला मैच क्रिस्टल पैलेस के साथ हुआ यार, यू वर लाइक 3-1 डाउन इन द फर्स्ट हाफ, you scored the first goal and then you do a mistake, Vanderman takes a red card, or the thing is now the players don't even want to fight for the match. The problem is that Vanderman भाई, अब many people, यार, I personally felt कि वो रेड कार्ड जो दिया गया था ना, इट वॉज अ वेरी सॉफ्ट डिसमिसल, नहीं बनता था रेड कार्ड. आई डो नॉट नो आप में से कितने लोग एग्री करते हो कि नहीं. तो दिस इज़ वन थिंग विच आई वॉन्ट टू से. एंड उसके बाद हाउ दिस गेम हैज़ गॉन, मतलब आप देखो, सो बेसिक डिफेंडिंग नहीं हो रही, रन्स नहीं किए जा रहे, कन्वर्जन नहीं हो पा रही है, राइट, शॉट एक्यूरेसी नहीं है, कुछ नहीं है. एंड अभी लेट्स से आपने इतनी हमने बात कर ली है, ठीक है, नाउ मैं ये कहना चाहता हूँ कि व्हाट इज़ द आउटकम यार. We still have 9 games left in Premier League, but none of us are confident. And this is the first time कि यार we all have accepted कि maybe relegation is something, championship is something which you all gonna see. So I want to ask यार, ever since Pochettino left, yeah, Jose came with his own style. He had his saying. There is Conte ने क्या बोला था? We all remember about Spurs. And then Ange came. Ange की words मेरे को याद है कि it looks, I have understood what's going on. I was not able to see. मतलब कैसे, even in his interview recently, what Ange said कि भाई, this club pretends to be a big six, but it isn't. Expenditure नहीं करता. Season we finished fifth. Ange wanted to get Mbumo, Pedro Neto, Mark Gahey, um, as a, but let's, we do not know यार कितना प्लेयर है, but this is true, we don't do a expenditure much. हमारे wages का structure एक issue है. Now when Fabri
and Fabrizio Paratici came and Johan Lange came. They tried to do the same thing. So अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहूँगा, बट दिस इज़ व्हाट हैज़ हैपेंड सो फार यार. एंड यूजली किसी भी मैनेजर के 2-2 साल का होता है टेन्योर, एंड थॉमस फ्रैंक का टेन्योर वाज जस्ट लाइक फॉर 8 मंथ्स. एंड उसके बाद अब इगोर टुडोर का यार 1 मंथ का भी नहीं हुआ, एंड देन देयर इज सैकिंग न्यूज़. सो this is the whole point. What is the solution now for the next 9 games? आई थिंक आपके प्लेयर्स में इंटेंसिटी बची नहीं है, कुछ तो बैच के लिए खेलना नहीं चाहते हैं. व्हाट इज़ द मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग टू डू, आई वुड से, इज कि गो विद अकेडमी प्लेयर्स. You kept getting young prospects. You got Souza, you had Luka William Barnett, Dane Scarlett. ऐसा नहीं कि आपके पास प्लेयर्स नहीं थे, आपने तो अपने कई प्लेयर्स को तो लोन पे भेजा हुआ है. लूका विस्कोविच पता नहीं अब अगले साल आएगा नहीं आएगा. देयर रूमर्स ऑफ हिम गोइंग टू बारसा. So you have young players, integrate them, use them. क्योंकि anyways the season, I do not know कि what's gonna happen. Mostly we are gonna go down the way things are going. But that's what.